A very good morning to all of you and welcome back to the channel. So here we're starting with the analysis video for 1st of September 2023. So let's see what are the important topics of the day. So starting with economy. So economy grows 7.8% and this is the fastest in 4 quarters. So that is a good news. And when we talk about the gross value added in the economy, even that's sped up to a 4 quarter high of 7.8% in the first quarter of this current financial year. But when we talk about the economic shock, so economists they reckon कि आने वाले time में because of weaker monsoon, high inflation, global headwinds, and we are also expecting apart from these three factors कि आने वाले time में government का capital expenditure भी कम हो सकता है. तो again these four factors can temper the pace of the growth through the rest of the current fiscal year. And when we're talking about manufacturing sector ki gross value added, that grew for the second quarter in a row after half a year of contraction. So here also we are seeing recovery. And then agriculture, forestry, and fishing GVA that grew at 3.5%, but it was services sector that saw the sharpest surge and it lifted the estimates that were released by the National Statistical Office. So this is the sector-wise division of the GDP growth rate that we have seen. And when we have to look at this trend and understand the trend kya raha previously, so you can see कि it was declining sharply. इसके बाद एक sharp jump देखा, उसके बाद again it started to decline, थोड़ा stabilize हुआ, and again it is reviving back again at a slower pace. So you can see right now we are at 7.8% growth rate. So last के जो 4 quarters में you can see this, these are the last 4 quarters. This is the highest growth rate that has been recorded. So if you're preparing for Haryana Civil Services, again, this is one of the schemes and its features, which is Chirayu Haryana. So free healthcare of up to ₹5 lakh annually under Ayushman Bharat or the Chirayu Yojana for over 35 lakh impoverished families. And other benefits are also mentioned. E-Sanjeevani, OPD is there, over 500 medicines and 319 operation tests and dental examinations. They are available for free of cost. And iske upar HCS में एक question भी आया था. They were asking specifically कि कौन से test free of available आप करा सकते हो. इसके अलावा approximately 1.5 crore free test through Nirogi Haryana healthcare scheme is also provided to the beneficiaries. So when we talk about Punjab and the drug terrorism, so how local level पे हमने previously deal किया कि local level पे जो different stakeholders हैं, how they are coming to the forefront and they are showing strength, and local level पे उसकी वजह से results भी देखने को मिल रहे हैं. So southern Malwa region of Punjab में बात करें तो a vigilante wave is sweeping through the villages to tackle the decade-old drug problem that is debilitating the state. So talking about culture, so in these pictures, you can see these are the pictures from the Radha Krishna temple at Ramtatvali and before and after conservation. So here this is before and this is the after conservation exercise was done. So apart from this, we are seeing key painting at Ladakh's 12th century Mangyu temple. So there've been restoration
going on. So how heritage conservationists, they are playing important role in preserving the culturally and historically significant artifacts and the monuments. So different places. This is the painting from Ladakh they're talking about. This is before and again after restoration. So guiding principle for an art conservator is staying true to the art. So if there is no funding, agar koi funding nahi hai, funding challenge hai, you cannot actually do what you want to do. So this is one of the important aspects, and यहाँ पे different sites भी mention की गई हैं, so you can just spot the important ones and look for the locations and their historical significance. Then there is project of Sumdachun in Ladakh. It was awarded for the excellence by the UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation in 2011. So here also you can see how freelance painter conservators, painting conservators, they are playing important role too. Again, you can connect this thing with the gig economy and conservation of our heritage sites. So Dalit targeted violence or dimming of Tamil Nadu's halo. So talking in this context, specifically the state. So before also there have been incidences in the state where Dalit students, they have been attacked. So in an incident recently in Tamil Nadu earlier this month, we saw a Dalit school student who was attacked by 3 students wielding a machete. So sister was also attacked when she tried to intervene. So Dalits, they continue to face the violence in some form or the other. And even you can see students and children, they also have to go through the same thing. सो आज के टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं कि कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो उनका प्राइमरी रोल क्या है, सो मोस्ट ऑफन पैटर्नाइज्ड बाय यंगस्टर्स आल्सो इज सीइंग दैट इज टू क्रिएट एग्जैजरेटेड कास्ट स्पेसिफिक सिंबलिज्म्स. दिस इज द phrase that you can pick up from this article, exaggerated caste specific symbolisms. So जो organizations हैं, caste organizations typically portray करते हैं दलित्स को और उनके development को as a threat to their particular interests. So this is one of the projections, and by organizing Guru Pujas, every caste has found a social icon also around which to rally. So different caste के social icons exist करते हैं. It is not far-fetched to imagine कि जो youngsters हैं behind these violent incidents, they're influenced by this. So in the past 3 decades, every government and other political parties, they have not only allowed, but they've also fully participated in celebration of these caste icons. So social and political organizations both, दोनों को acknowledge करना important है. The issue of violence against Dalits in the state exist करता है. पहले आप acknowledge करोगे, and again then you'll be working upon उसको address कैसे करोगे. And then political factor भी exist करते हैं, caste based violence and discrimination को और promote करने में. यहाँ पे specifically हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की polity की हम बात करेंगे. So question ये उठ रहा है कि why are Dalits facing the violence? क्यों उनको violence face करना पड़ रहा है in a state जहाँ पे political party जो currently rule कर रही है that boast of promoting social justice? Why did not anti-Brahmin politics transform itself into anti-caste politics? So what is connection between ki social changes kya ho rahe hai that have taken place so far and situation now in Tamil Nadu? So iske upar again, there has been no research, no debate, no political narratives to explain this emergent phenomenon. एंड पॉलिटिकली भी बोला जा रहा है कि एक और थोड़ा डेवलपिंग ट्रेंड है राइट नाउ, दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न इज राइज ऑफ बीजेपी इन तमिलनाडु. तो इतना ज्यादा जब हम द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे
बीजेपी और कांग्रेस इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वहां पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है हमेशा वो ही कहीं ना कहीं डोमिनेंट रही है। सो बीजेपी लेड हिंदुत्व पॉलिटिक्स, ये अगेन थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक हो गया, दैट्स हाउ वी कैन नॉट राइट इन द आंसर्स। सो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो है, इवन दे आर आल्सो रेयरली स्पीकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन तमिलनाडु फेस्ड बाय द दलित्स। सो रादर देन, अगर आप सप्रेस करोगे दलित ओपिनियंस को, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए कि देयर इज अर्जेंट नीड टू एड्रेस द इशू ऑफ वायलेंस दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट द दलित्स, एंड डिस्करेज किया जाना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, डीलेजिटिमाइज किया जाना चाहिए एग्जिस्टिंग कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो करंटली फंक्शन कर रही है। तो अगेन गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट नीड्स टू or stop the participating in guru pujas and establishing memorials for the caste leaders. So जो idea है of equality, it should be propagated earnestly in schools, colleges or workplaces. पर different levels पे अगर इनको promote किया जाएगा तो जो violent incidences देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप decline होने लग जाएंगे। So schools and colleges में monitoring committees बनाई जानी चाहिए that needs to involve teachers and parents so that जो discrimination हो रहा है स्कूल और कॉलेज लेवल पे उसको हैंडल किया जा सके। पुलिस must be held accountable जब हमें lax investigation देखने को मिलता है and bringing the perpetrators of violence against Dalits to justice. So Dravidian movement stands for social justice. So criticism of Dalit activists, political parties and intellectuals is not to negate the achievements of this movement on social justice front in the last 100 years, but that is only to point out कि आज के time में how things are changing. So it's important for inclusive social justice कि required steps लिए जाने चाहिए। So Adani Group of companies के against जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, here we are also having the OCCRP's Adani report. So hearing is going on, the case is sub judice. Then rule number 19A क्या है, वो the securities contracts regulations rules 1957 and investigation में what did we actually find and again उसके क्या implications हो सकते हैं। So Supreme Court ने direct किया recently SEBI को to conduct investigations in accordance with specific terms of reference. तो पहला जो term था was कि probe करना violation of Rule 19A of this Act. Apart from this, जो बाकी दो terms of conditions थे, that was a non-disclosure of the related party transactions and जो manipulation किया जा रहा है stock prices में। So कुछ acquisitions थे। Rule 19A है क्या? So under this, we see this was inserted through an amendment in 2010 under the continuous listing requirement, जो ये बोल रहा है कि every company जो listed है Indian stock market में उसको maintain करना पड़ेगा at least 25% of the public shareholding. तो यहाँ पे public shareholding की बात करें तो public is defined in said rules as persons other than the promoter and promoter group. So 25% public shareholding maintain करना important है for any company that is listed in the Indian stock market, and public का मतलब is any person, any individual apart from the promoter and promoter group also. All right, so जो ये minimum 25% का threshold है for the public shareholding vitally ensure करता है कि adequate shares of a listed company they're available for trading in the stock market so that प्राइस डिस्कवरी जो हो सके वो ट्रांसपेरेंटली हो सके। एंड अगर इस रूल को वायलेट किया जाता है तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग jeopardizing the integrity of the equity market. तो हाउ एन यू कैन सी कि वायलेशन इज आल्सो लीडिंग टू वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एज वेल। सो लेटेस्ट रेवलेशंस क्या है, मतलब जो अभी फाइंडिंग्स की गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की गई है बाय द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स, उन्होंने रिपोर्ट किया है
कि 2 मॉरिशस बेस्ड फंड्स हैं, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है. They have invested and traded in large volumes of shares of 4 Adani companies between 2013 and 2018. So जो 2 की फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन फंड्स के, उनका यहाँ पे नाम दे रखा है. एंड जो मनी था that was channeled through a Bermuda based investment fund which is the Global Opportunities Fund. So value of जो investments है these 2 people, it was around $430 million in March 2017, and approximately this is at, we can say, almost totaling to 2,795 crore rupees current exchange rate के according. तो 2017 में दोनों इन्वेस्टर्स का जो शेयर था it was 3.4% of the total share in Adani Enterprises. एंड इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और हमें ये पता चला है कि जो यूएई बेस्ड सीक्रेटिव फर्म है which is named Excel Investment and Advisory Services Limited, which is owned by Vinod Adani, who's the brother of Gautam Adani and a member of Adani Promoter Group also. It has received over $1.4 million in advisory fees from the management companies. So investigators, they have not only dug up जो invoices थे, transaction records थे, proper investigation हुई इन सब की, but also जो internal emails थी जो suggest कर रही हैं कि जो सारी companies है, they were investing funds into the Adani Group stocks at behest of Excel Investment and Advisory Services Limited. So again, कहीं ना कहीं manipulation किया जा रहा है. सो सेबी का और डीआरआई प्रोब अलग से चल रहा है. डीआरआई इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड सेबी चीफ जनवरी 2014 में ऑन डीलिंग्स ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट. इस एरिया में एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. देयर आर इंडिकेशंस की जो पार्ट है ऑफ द साइफन ऑफ मनी, इट मे हैव फाउंड इट्स वे टू अगेन स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया एज इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द अडानी ग्रुप. तो मतलब पैसा घूम के अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, बट जो प्रोसेस है उसको इन्वेस्ट करने का, दैट इज रॉन्ग. So SEBI, it has already been indicted by the expert committee for amending the FPI and listing obligations and disclosure requirement regulations since 2018, which open up regulatory loopholes facilitating concealment of ultimate beneficiary ownership of FPIs and transactions with the related parties. So ये change किया गया था by the SEBI. So it is now clear कि जो amendments थे, they were made after alleged contraventions of 75% rule of this thing by at least 2 Adani group of companies in 2017 as found by the another investigation. So SEBI की जो investigation है regarding stock price manipulation या insider trading Adani stocks में, they're difficult to take a face value as of now. And expert committee ने, they've already reported कि 849 alerts they were generated vis-a-vis Adani scripts through SEBI automated surveillance systems between 2018 and 2022. So insider trading के ऊपर and again stock manipulation के ऊपर alerts किए गए थे. So let's see, अब पूरा matter it is sub judice. So Supreme Court का क्या final verdict रहेगा, and definitely इसका implication हमें directly देखने को मिलेगा in terms of stock market prices में. अगर positive रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा jump देखने को मिलेगी, and if it is मतलब जो allegations लगाए गए if they are held true, तो stock market or the prices they are going to crash, specifically Adani group of companies के, and obviously इसका multiplier effect भी रहेगा overall market sentiment के ऊपर. So special session of parliament. So again this becomes important. Special sessions की बात कर रहे हैं. This will be held from September 18 to 2022. Agenda under wraps. कौन से agenda लिए जाएंगे? So session, it will have 5 sittings. Parliamentary Affairs Minister says कि amid Amrit Kal, government is looking forward to fruitful discussions and debate in the parliament. And
ऑपोजिशन का कहना ये है कि इट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ जो अटेंशन है दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अडानी ग्रुप। तो हमारे लिए आज जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। सो दिस विल बी हेल्ड, इट विल बिगिन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द G20 समिट, जो फाइनली एंड हो जाएगा 10th of September को। सो 18 से 22 तक विल बी हैविंग दिस स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो ऑल दो स्पेशल सेशन के बारे में जो बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, वो यहाँ मेंशन नहीं किए गए, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू सर्च इट। So we are seeing lowest August rainfall in a century, last 100 years. This is the lowest rainfall that we've recorded this August. So weaker monsoon, food inflation के ऊपर definitely negative impact हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। This is one of the major challenges जो हमारी overall GDP growth को भी negatively impact कर सकता है। Then Jaya Verma, she becomes the first woman to head the railway board. So she was appointed to the railway board, a top decision making body, railway ministry की है, and so it is, can see, first time happening in 118 years of history. So though we are seeing changes जब हम बात करते हैं women led development की, but again they are happening at a slower pace. So 2023 का Raman Magsaysay Award goes to an Assam-based oncologist, Ravi Kannan. So he's a surgical oncologist, R. Ravi Kannan. He's director of the Kachhar Cancer Hospital and the research center in Assam. It is one of the Raman one of the Raman Magsaysay Award winners for 2023. So he is credited with revolutionizing cancer treatments in Assam through people-centric and pro-poor healthcare. The keywords are people-centric and pro-poor healthcare services he has been providing in treating cancer. Then after India, we seen कि Philippines, Malaysia and Indonesia, they are also protesting जो map China ने release किया है. Again, China के territorial claims which are violating sovereignty of different countries. And China इसको पहले भी करते हुए आया है. So it's important to respect the UN norms, and Indonesia is the third ASEAN country to issue a statement on these maps issued by China. So China must be again जो उसके maps जो release करे, that needs to be in accordance with the UN convention, the law of seas 1982 convention जो है, and any line drawn and any claims made, they must be in accordance with this UN convention. So as you're talking about Adani group of companies, so you can see already shares they are falling on allegations investors had ties to the promoters. मतलब ये चीज भी निकल के आ रही है जो investors, जो भी investors थे Adani group of companies में, they had close ties with the promoters also. So hundreds of millions of dollars were invested in the Adani stock via opaque Mauritius-based investment funds. ये पूरी अभी हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रिजल्ट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया है. Core sector we see grew at 8% in July. Output has shrank by 2.2% from June's level. So all 8 core sectors, they have clocked year-on-year growth in their output for the first time since May 2022. So सारे 8 core sectors में हमें growth देखने को मिली है. तो जो बेसिक्स है यहाँ पे 8 कोर सेक्टर्स, कौन से 8 कोर सेक्टर्स हैं, उनका वेटेज क्या है, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उनका कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज है, ऑल ऑफ दैट इज अगेन बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पता होना. Fiscal deficit touched 33.9% for the current financial year's target at end of July, and इतना टारगेट हम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं.
मिंट न्यूज़पेपर में देखे तो स्टोरी बिहाइंड जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर स्टिल इट इज शेकी. सो ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन फ्रॉम अप्रैल टू जून 2019 until 2023 अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, it is averaged at around 3.6% per year. So this is the trend you can see, and जो इतना नेगेटिव में जा रहा है, this is during कोविड-19 टाइम पीरियड. इसके बाद शार्प रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है. तो जीडीपी ग्रोथ रेट और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ रेट, यहाँ दोनों को साथ में प्लॉट किया गया है. एंड यू कैन सी कि हाउ मतलब सिमिलर ट्रेंड है. जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ हुई, या आप ये भी देख सकते हो कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीडीपी ग्रोथ का. जैसे जैसे हमें ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिला, उसी डायरेक्शन में जीडीपी ग्रोथ रेट भी मूव कर रही थी. तो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. So which all sectors they were responsible for the GDP growth in the first quarter? So here we see कि when we add up the private consumption expenditure, investment, government expenditure and net exports. तो net exports मतलब exports minus imports जो हम कर रहे हैं, उससे we get the net exports. This is a method that we've been following to calculate the GDP. So quarter one GDP was 40 trillion rupees or 7.8% higher than previous year. And apart from this, negative it was because of the COVID-19 pandemic induced lockdowns. So उसके बाद we are seeing कि revival हो रहा है, recovery हो रही है in the numbers. It looked good due to the low numbers. So again low जो हमें देखने को मिला, उसके बाद जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से we're seeing the numbers appears to be good. तो लास्ट 4 years का हम देख चुके हैं, ट्रेंड देख चुके हैं, एवरेज की बात कर चुके हैं. इन्वेस्टमेंट फ्रंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ग्रू 8% ऑन ईयर. एंड ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 years जो रहा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, दैट वाज 4.1%. एंड दिस इज स्लाइटली बेटर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट. सो जहाँ पे अगर हम बात करें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दैट इज पिकिंग अप एट स्लो पेस. तो इन्वेस्टमेंट इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग new jobs and driving up the individual income and aggregate economic growth. तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब हम देख रहे थे कंज्यूमर डिमांड वीक हो गई. सो दैट्स हाउ वी कैन से कि चीजें बैलेंस हुई. देन रियल जीडीपी ग्रोथ एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. फर्स्टली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. तो नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो यू गेट द रियल जीडीपी ग्रोथ. तो रियल जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली आपको ये बताती है कि रियल सेंस में कितना अमाउंट ऑफ हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज हुआ है, रादर देन कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ है. तो वो हमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से पता लगता है. तो एक्चुअल सेंस में अगर हमें किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ को सेस करना है, तो वी नीड टू लुक एट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर्स. सो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, रियल वाज एट 7.8% एंड नॉमिनल हमेशा ज्यादा रहेगा to the real GDP growth. तो ये चीज भी आप माइंड में रख सकते हो. तो the nominal was recorded at 8% and इसके अलावा यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि रियल जीडीपी हमेशा लोअर रहेगी नॉमिनल से, क्योंकि नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन माइनस करके आपको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट मिलती है. Then GDP deflator is nominal GDP growth divided by real GDP growth and then you multiply it with 100 also. तो आपको GDP deflator मिल जाएगा. And जो rate of inflation है used in the growth calculation, that is called the deflator, which tends to be somewhere between retail and the wholesale inflation के बीच में lie करता है. So given कि जो wholesale prices थे that fell, so it's hardly surprising कि जो GDP deflator था that is very close to 0% only. So there isn't much of a difference between nominal और real growth rate. So इसलिए you can see कि 0.2% का ही difference है between both of them. So कौन से ऐसे sectors हैं which have been doing good? तो जब बात करते हैं value added terms में, agriculture, industry and services, broader level पे, तो हम इन 3 sectors की growth rate को assess करते हैं. So जो best performing sector था that was services sector. And इसके अलावा services के अंदर भी financial services, real estate and professional services, वहां पे हमें ज्यादा growth देखने को मिली है.
So agriculture की growth rate was 3.5%, industry grew at 5.5, and industry के अंदर भी manufacturing sector की growth rate was 4.7%. Then construction sector बहुत important sector हमारे Indian economy में, उसकी growth rate थी 7.9%. That was because of housing sector driven growth rate. So services sector का contribution and proportion की बात करें तो it forms 56% of the share in the gross value added. And इसका जो contribution है वो भी for equally important है in the GDP growth rate. Quote of the day is that there will be pressure in terms of food inflation, headline inflation. It will get mitigated because of various steps that the government will take, but food inflation is still a cause of concern. तो ये हमें पता है, हम देखते हुए आ रहे हैं कैसे चीजें चेंज हो रही है, कंसर्न्स क्या है हमारे लिए ब्रॉडर जीडीपी लेवल के ऊपर भी. Coming to Financial Express, let's see the important topics from here. GDP growth rate हम इसको in detail देख चुके हैं. Quarter wise हम देख चुके हैं. Gross value added के हिसाब से देख चुके हैं. Real versus nominal देख चुके हैं. Sector wise भी हम देख चुके हैं. तो key performing sectors again, services sector की हमने बात करी. Financial, real estate, professional services, followed by trade, hotels and transport. तो again, tourism sector भी important role play कर रहा है. Construction is important. Public administration and defense. Mining and quarrying, manufacturing and agriculture, forestry and fishing is the lowest level. So controversy around the Adani firms, इसको भी आज हमने in detail discuss कर लिया. So it's a repeat. Fiscal deficit देख चुके हैं. How much target we've already met. Infrastructure sectors, it sees 8% growth in July. तो वहाँ पे भी हमें revival देखने को मिल रहा है. You can see, you can understand that through this trend of core sector growth rate. So it is also reviving up. तो हमारी इकोनॉमी में जो मोमेंटम है दैट कंटिन्यूज in general and it is not driven by price related distortions. तो जो momentum है it is not driven by the price related distortions. ये बहुत positive picture portray कर रहा है हमारे economic system के बारे में. So private consumption is also picking up. Rural sector से जो demand है, consumption demand, that is picking up. So जो term use की जाती है complete economic sense में, that is private final consumption expenditure. तो उसने भी 6% growth rate हमें देखने को मिली है during the first quarter. And broad based recovery देखने को हमें मिल. But again, रियल टर्म्स में कितनी ग्रोथ है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो रही है. अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर रिड्यूस होगी. तो अगेन रियल टर्म्स में वी कैन सी कि हमें जो ग्रोथ रेट में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट में जो फॉल देखने को मिल रहा है रियल टर्म्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. So you can see infrastructure construction sector में property registrations मुंबई में they hit the decadal high. तो ये sector housing sector specifically बहुत important role play कर रहे हैं driving growth herein. So UPI transactions making new record. It might have crossed 10 billion level in the month of August. So you can see the trend has been going up, and इसके अलावा value terms में you can see this is a trend. So this is the percentage change, but हम overall value की terms में trend की बात करें तो you can see it is rising. Coming to Indian Express newspaper, here let's see. So Om Birla is the Speaker of Lok Sabha, says कि not only the MPs but citizens also हमें भी seriously introspect करना चाहिए कि how we can restore the preeminence of Parliament.
So since we are seeing disruptions in the functions of the parliament and even opposition क्या role play कर रहा है, तो how we can ensure effective and efficient functioning of the parliament during sessions. So special session की हम बात कर चुके हैं. The government calls a special session of the parliament later this month, keeps all guessing. So 5 sittings from September 18 to 22 will be there. Speculation on क्या agenda रहने वाला है. And again जो मैंने बोला इसके पीछे का constitutional provisions पता होना हमें important है. The Nataraj statue, you can see finishing touches being done. Again, historical significance क्या है culturally, what does it signify? So सब आपको बताना important हो जाते हैं. The largest indigenously developed nuclear plant जो गुजरात में है starts the operations at full capacity. So यहाँ पे firstly आपको ये find out करना है कि nuclear energy का क्या sectoral कितना share है in terms of providing the energy overall, and this is indigenously developed किया है हमने 700 megawatt electric nuclear power reactor at the Kakrapar Atomic Power Project in Gujarat. So this is the largest indigenous plant जो India ने set up किया है, and now it has started operations at full capacity. So India का जो civilian nuclear program है, this is seen as a landmark event in India's civil nuclear program. So this is a variant of the pressurized heavy water reactor. So it uses natural uranium as a fuel and heavy water as moderator and constitutes the mainstay of India's nuclear power fleet. So again, यहाँ पे पूरा proper evolution भी आपको पता होना चाहिए जब हम civil nuclear program of India की बात करते हैं. So जो हमारी existing nuclear power capacity है, that is somewhere around 7,500 megawatts, and we want to increase it up till 22,500 megawatts by 2031. And right now, जैसे कि मैं आप लोगों को share की बात कर रही थी, तो nuclear power capacity constitutes around 2% of the total installed capacity of 4,17,668 megawatts. So 2% is the share of nuclear energy. And next we are working upon developing a 900 megawatts of pressurized water reactors of again indigenous design. So यहाँ इस वाले प्लान के कंस्ट्रक्शन से जो हमारे लेसन्स जो एक्सपीरियंस रहा उसको हम आगे यूटिलाइज करने वाले हैं. So over the last few years हमें देखने को मिल रहा है कि जो Parliament of India, it has made concerted efforts to introduce information technology. जब हम functioning of the Parliament की बात कर रहे हैं and its secretariat in order to connect better with the members
and other legislative bodies and citizens. So this is one new change that has been witnessed, and इसके अलावा new building of parliament that is incorporated top rated green building norms, modern technology to reduce the carbon footprint and raise efficiency. So digital Sansad app that has been developed, वो continuously fine tune किया जा रहा है उसको to serve the members and stakeholders in a better manner. And Parliament of India is well on its way to becoming a truly e-Sansad. So this would be also one of the greatest achievements when we fully realize this thing. So ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए. अब अगर आपको क्रिटिकली असेस करना इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग द पार्लियामेंट सेशन, सो उसमें आप लेके आओगे जो डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं हमें, डिस्ट्रप्शंस एंड adjournments ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशंस. So this is a repeat, bigger BRICS, is it better to or not? So foreign policy की perspective से this is an important topic. Origin of BRICS, यहाँ पे पूरा evolution है, contribution in terms of global GDP and global trade क्या है, expansion of BRICS earlier कैसे पहले कैसे expand हुआ, African Latin America की presence कैसे हमें अगेन ब्रिक्स को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे कंट्रीज फ्रॉम एशिया, देन रशिया और चाइना का क्या स्टेक्स है व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द ब्रिक्स नाउ सिंस 6 न्यू मेंबर्स और ऐड किए गए हैं. So you can just go through it once. हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो that's why we're not taking this up again. And military takeovers in the former French colonies. So पहले के टाइम की बात की जा रही है. यहाँ से हमारे पास 2020 से we have the evolution, पूरा माली चार्ट, ये हमने कल भी देखा था सेम चार्ट, एंड लेटेस्ट जो है गैबन has also been added to this list. So here it is Gabon, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, गिनी, चार्ट. So इस एरिया में हमें जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मिलिट्री को देखने को मिल रहा है. So this is a recent West African pattern. So again, people are losing their trust in the democratic polity in these countries because कहीं ना कहीं जो हम इकोनॉमिक डिवाइड की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो वहां पे इनइक्वालिटी इज ग्रोइंग. मतलब इनइक्वालिटी की वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, पीपल दे आर hardly able to make the two ends meet, and दूसरी साइड इतनी rich class है कि they are least bothered about the poor people. So that's why हमें military को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं West African countries. GDP growth आज GS इकोनॉमी से काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने क्रिटिकली असेस किए हैं. So we need to become a country of investors and not savers. तो वो टाइम जा चुका है when we obviously wanted to be saving country, हमें saving rate को increase करना था, but now it is important कि वो जो savings हम कर रहे हैं उसको हम utilize करें in terms of good and sustainable and high return investment. So India needs to become a country of investors rather than of savers या traders. So specifically even अगर हम stock market की भी बात करते हैं तो वहां पे भी again as in investments की जब हम बात करते हैं तो that needs to increase. So that's all for today. Thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel. Keep watching for these daily updates and the critical analysis that we take up and bring it for all of you.